So different WBCs and their functions and their biochemical role. This chart is not present in the notes as well as book. WBC is also known as leukocytes, and they have important defense and immunity function in the antigens. They will destroy the foreign cell. जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म को आपको इन्फेक्शन होगा, that will be destroyed by WBCs, right? And this WBC will have a nucleus in the structure. Will have a nucleus in the structure, and few of them also has a granules in their cytoplasm. So depending upon that, they are divided into granulocytes and agranulocytes. जिसमें ग्रैन्यूल्स होंगे उसको बोलेंगे ग्रैनुलोसाइट्स, जैसे आपका बेसोफिल, यूसिनोफिल, और जिसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे उसको बोलेंगे मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स. Then now we will see one by one. So neutrophils, what is the role of your neutrophils? So they are the scavengers. They will scavenge a bacterial invasion. जो भी बैक्टीरियल सेल आपके बॉडी में जाएगा उसको वो पकड़ लेंगे और उसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, उसको एनग्लब कर लेंगे, मतलब फैगोसाइटोसिस कर देंगे. सो न्यूट्रोफिल्स विल फैगोसाइट दैट फॉरेन इन्वेंटेड माइक्रोऑर्गेनिज्म that will digest them. Dead cell will be removed from the tissue. So that is the role of your neutrophils. Neutral means they will neutralize. Neutrophils means what? They will neutralize your foreign invasion. जो भी आपका माइक्रोऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हो गया तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है? न्यूट्रोफिल्स करते हैं. न्यूट्रोफिल क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ WBC. सो दे आर अट्रैक्टेड बाय. अभी उसको कैसे मालूम होगा कि कहाँ पे इन्फेक्शन होगा या कहाँ पे नहीं होगा? तो अगर मान लीजिए आपके थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे आपके थ्रोट में इन्फेक्शन होता है वहाँ पे एक कीमोटॉक्सिन्स रिलीज हो जाएगा. तो कीमोटॉक्सिन केमिकल्स होते हैं वो रिलीज हो जाएंगे, और वो रिलीज जैसे होते वो न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे जाएंगे, अटैक करेंगे. क्या हुआ है, गार्ड कर रहे थे ना. मतलब आप देखो, अगर मान लीजिए 2-3 पेट्रोलिंग पार्टीज है कश्मीर में, 2 पेट्रोलिंग पार्टी की तरह, एक इधर गया एक उधर गया, मतलब 3 साइड पे 3 गए. अगर एक साइड पे कोई धमाका होता है बाकी की पेट्रोलिंग पार्टी वहाँ पे जाती है देखने के लिए क्या हुआ क्या. तो वैसा ही तो ये केमोटॉक्सिन्स रिलीज होते हैं वहाँ पे, और उसके बाद में वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट होने के बाद न्यूट्रोफिल का क्या करते हैं, जो भी फॉरेन माइक्रोब्स है उसको निगल लेंगे और उसको फैगोसाइटोसिस कर देंगे, उसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर देंगे. ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं बेसोफिल्स में. सो वट एवर द ग्रैन्यूल्स आर देयर इन अ बेसोफिल that consist of a lysozyme, one enzyme known as a lysozyme that will digest the engulfed microorganism. जो फैगोसाइटोसिस करते हैं ना बेसोफिल न्यूट्रोफिल्स, वो क्या करेंगे, वो माइक्रोऑर्गेनिज्म को खा लेंगे, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करेंगे. डाइजेस्ट करने के लिए तो एंजाइम्स लगेगा. तो वो बेसोफिल्स में जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो ग्रैन्यूल्स में लाइसोजाइम नाम का एंजाइम होता है that will digest your microbes. Okay, is that clear? Neutrophils. Now basophils. So basophils also consist of cytoplasmic granules. But in that cytoplasmic granules, they will have a heparin, and heparin is an anticoagulant. It will have a histamine and other inflammatory chemicals, and these basophils will promote the inflammation. जहाँ पे भी आपका कुछ इन्फ्लेमेशन हो गया तो वहाँ पे ये बेसोफिल्स जाएंगे और उसमें क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे केमिकल्स. कौन से केमिकल्स? हिपेरिन रिलीज करेगा, हिस्टामाइन रिलीज करेगा, और अदर केमिकल्स जो इंटरलोकिन, थ्रोम्बोक्सिन वो सब रिलीज कर देगा. So they are inflammatory in action, basophils. Then eosinophils, they are also capable of phagocytosis, but up to a less extent. Okay, then neutrophils. If the microorganism is too big, अगर जो माइक्रोऑर्गेनिज्म हो गया आपके अंदर वो बहुत बड़ा है जिसको न्यूट्रोफिल्स उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे eosinophils को बुलाया जाता है. रहता है ना. नॉर्मली क्या होता है कि पेट्रोलिंग पार्टी भेज दी आपने, जो टेररिस्ट है 2-4, वो जो पेट्रोलिंग पार्टी है उससे कुछ नहीं हो रहा है उनको, फिर क्या करते हैं, गरुड़ कमांडोज बोलते हैं. गरुड़ कमांडोज कौन है यहाँ पे? यूसिनोफिल्स. कैपेबल ऑफ फैगोसाइटोसिस द लार्ज साइज्ड फॉरेन ऑर्गेनिजम्स, न्यूट्रलाइजिंग द बिग साइज bomb which cannot be easily phagocytosed by neutrophils. So they will also promote implementation and releasing of toxic chemicals. Okay, but they can decrease the inflammation by हिस्टामिनेज एंजाइम. अगर नहीं समझ में आए तो छोड़ दो. देन अगेन नेक्स्ट वन इज मोनोसाइट्स. सो इट इज द लार्जेस्ट WBC प्रोड्यूस्ड. इट इज द लार्जेस्ट साइज WBC. जो WBC है अमंग्स उसमें सबसे लार्जेस्ट साइज होता है इस सेल का, मोनोसाइट्स का. और ये क्या करता है, इंटरलूकिन 1 प्रोड्यूस करता है, विच इज द इंफ्लेमेटरी मीडिएटर.
which in turns increases the temperature. अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए आपके बॉडी के अंदर, वहाँ पे मोनोसाइट भी जाएंगे, ये सब WBC वहाँ पे जाते हैं, मोनोसाइट्स भी जाएंगे। मोनोसाइट जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो इंटरलूकिन 1 नाम का एक केमिकल है, वो रिलीज करेंगे। वो क्या करता है, वो इंटरलूकिन जाएगा आपके ब्रेन में, जो आपका हाइपोथैलेमस है वो आप क्या आदेश देगा कि यार आपके बॉडी में कोई बहरूपिया या फिर टेररिस्ट घुसा है, आप क्या करो, आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करो। एज देयर इज अ इन्फेक्शन, तो मोनोसाइट्स विल रिलीज द इंटरलूकिन 1 एंड interleukin will go and increase the temperature of body along with hypothalamus. Largest WBC will produce interleukin 1 and that which in turn increases the temperature against the invented microorganism. उसको किल तो करना है ना, तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करो। मतलब आपका बुखार आया, मतलब क्या, आपको बुखार कब आता है, इन्फेक्शन होने के बाद ही आता है। बुखार आना इज नॉट अ बैड थिंग, to have a fever is not a bad thing, it is a good thing, it is a defense mechanism of your body. So fever is a defense mechanism of your body, कि आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करने का रीजन ही वही होता है, बॉडी विल इंक्रीज द टेम्परेचर, किल दैट माइक्रोऑर्गेनिज्म, उसके लिए बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ये अच्छी बात है और आप वैसे रहने दो, नहीं, वैसा नहीं रहने देने का। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है इट्स ओके, अगर कुछ हो गया आपका स्मॉल टाइम स्पेन के लिए, कुछ देर तक के लिए हो गया, बट अगर ये टेम्परेचर कंसिस्टेंटली रहता है तो दैट विल बी अ वेरी ट्रबलसम। अगर आपका टेम्परेचर वैसा ही रहता है 101, 103 फॉर लॉन्गर पीरियड, दैट टेम्परेचर इज बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन एंड दैट इन्फेक्शन मे इन्वेड योर ब्रेन, आपके ब्रेन में भी जा सकता है और आपको फर्दर न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो दैट्स वाई कि आपको टेम्परेचर डाउन करना पड़ता है पैरासिटामोल लेके। तो ऐसा नहीं कि आपका टेम्परेचर आना बॉडी के लिए अच्छी बात है, डिफेंस मैकेनिज्म है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आने दो टेम्परेचर कितना भी, कितनी देर तक रहने दो, ऐसा नहीं, उसको कम करना पड़ेगा, तो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते। नाउ नेक्स्ट वन इज लिम्फोसाइट्स। सो लिम्फोसाइट्स स्मॉलेस्ट मोनोसाइट, smaller than monocyte, cells will be smaller than monocytes and they are also found in the lymphatic tissue. They are found in the lymphatic tissue like spleen, lymph nodes. That's why the name is given lymphocytes. They are found in the lymphatic system. That's why lymphocytes. So there are two types of lymphocytes, T lymphocytes and B lymphocytes. T lymphocytes means thymus derived lymphocytes and B lymphocytes means bone marrow derived. And last one is the platelets. So platelets, they are involved in the hemostasis. Hemostasis means what? Hemo means blood, stasis means stopping of blood. अगर आपको किसी कहीं पे कट लग गया तो आपका ब्लड निकल रहा है, तो वैसे ही निकलता जाएगा, तो वो नहीं, वो स्टॉप भी होगा ना, स्टॉप होगा ब्लीडिंग। नॉर्मल अगर है आप, तो अगर आपका अबनॉर्मल है, आपका अगर एंटीकोगुलेंट ले रहे हो तो आपका स्टॉप नहीं होगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल है, कोई ड्रग नहीं ले रहे हो आप एंटीकोगुलेंट वगैरह, तो आपका विदिन 5 मिनट आपका ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा, 2 to 5 मिनट। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम इज 2 to 5 मिनट, 2 से 5 मिनट के अंदर आपका ब्लड क्लॉट हो जाएगा। Clotting time, normal clotting time is, so platelets, they are involved in the hemostasis, stopping of bleeding, and their production is stimulated by hormone known as a thromboplastin in the liver. Normal value is nothing but 2 to 3.5 lakh cubic millimeter platelets होते हैं। प्लेटलेट्स कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नॉर्मली उतने होते हैं प्लेटलेट्स बॉडी में। इसका रोल क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में। तो अगर कट लग गया तो आपका ब्लड क्लॉट करने के लिए कौन आएगा वहाँ पे, प्लेटलेट्स आएंगे। So every WBC has a protective and defense function in the body. They are involved in the immunity as well as defense of the body. WBCs. Okay. So it is just a range of different WBCs. Okay. Neutrophils 2.5 to 7.5 to 7.5 into 10⁹ per liter. इतना normal है। eosinophil का ये इतना important नहीं है आप। So there are different WBCs. So basophils will look like this. Neutrophils will look like this. Eosinophils will look like this. So these structures you will not easily see. You will not easily see using microscope. It is a colored microscope, colored electron microscope. इसके नीचे ही ऐसे स्ट्रक्चर रहते हैं। नहीं तो आप क्या करेंगे, लेंगे ब्लड और जाएंगे माइक्रोस्कोप के नीचे देखने, कुछ भी नहीं देखेंगे। ये अलग माइक्रोस्कोप होता है, कलर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का अमाउंट भी, उसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है। आपके कॉलेज में भी होगा ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप,
अगर किसी कॉलेज में है तो एक आधा होगा, हाँ, लेकिन पैथोलॉजी लैब में 100% रहता। तो उसके बाद में जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, दे आर अ फैगोसाइटिक सेल्स। सो ये न्यूट्रोफिल है एक, ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन, तो उसको क्या करेंगे, एनग्लब कर लेंगे, एनग्लब इंजेस्ट कर लेंगे, खा लेंगे उसको बाद में उसको डाइजेस्ट कर लेंगे लाइसोजाइम्स, ठीक है। नाउ विल सी different blood clotting factors. It is a very important chart. You have to read this chart by heart, because at least 3 or 4 times they have asked the question on this blood clotting factors, different blood clotting factors, कि आपके बॉडी में कितने क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं और उसका नाम क्या है, ठीक है। सो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, दे आर गिवन ए रोमन नंबर्स, like likewise this, okay. So we'll see that one by one. So blood clotting factor number 1, factor A, factor 1, it is known as a fibrinogen. Factor 1, it is known as a fibrinogen. Just forget about the ये क्या है, क्या होता है, ये सब बाद में अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे अपन। बस इतना याद रखो कि फैक्टर 1 को बोलते हैं फाइब्रिनोजन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। फैक्टर सेकंड को बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। So factor 1 is a fibrinogen, factor 2 is a prothrombin, factor 3 is nothing but the tissue factor, or it is known as a thromboplastin. Then factor 4 is nothing but the calcium or organic calcium. Then factor 5 is nothing but the labile factor or proaxelerin. That is a proaxelerin or acylglobulin. Factor number 5. Factor 7 is nothing but the stable factor or pro-converting. यहाँ पे बोलेंगे फैक्टर 6 का है, यहाँ पे फैक्टर 6 नहीं है, दैट इज नथिंग बट द स्टेबल फैक्टर और प्रो कन्वर्टिंग। देन अगेन फैक्टर नंबर 8, सो इट इज नोन एज एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, और इट इज नोन एज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। दिस वाज क्वेश्चन इन जीपैट 2021। फैक्टर नंबर 8 इज एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन फैक्टर। दिस वाज क्वेश्चन इन जीपैट 2021। ओके, लास्ट ईयर जो जीपैट हुआ है उसमें क्वेश्चन था, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, लेकिन मेरे दिमाग में रहता है। देन अगेन फैक्टर नंबर 9, इट इज नोन एज अ क्रिसमस फैक्टर। इट इज नोन एज क्रिसमस फैक्टर और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। दिस फैक्टर नंबर 8 इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। दिस फैक्टर नंबर 9 इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। देन फैक्टर नंबर 10 इज नोन एज अ स्टुअर्ट पावर फैक्टर। दिस वाज क्वेश्चन इन जीपैट 2009। स्टुअर्ट पावर फैक्टर 10 इज नोन एज अ स्टुअर्ट पावर फैक्टर। जीपैट 90 में ये क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट वन इज factor number 11. So plasma thromboplastin antecedent factor. Plasma thromboplastin antecedent anti-hemophilic factor C. इसको बोलते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट या फिर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी। देयर आर 3 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी। ओके, सो फैक्टर नंबर 8 इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, फैक्टर नंबर 9 इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, and factor number 10 is factor number 11 is anti hemophilic factor C. Okay, then factor number 12 is known as a Hagman factor. Factor number 13 is known as a fibrin stability factor. Okay, so these factors are very important. आप उसको रट लो, यहाँ पे भी या फिर बुक्स में भी, बुक में है ये चार्ट, बुक में रट लो आप, इसके ऊपर क्वेश्चन आता जाता है। 4 बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है जीपैट में, नाइपर में भी आता है। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट चार्ट है। So out of these factors, these 13 factors, out of these, actually they are not 13, they are just, out of these factors, some factors are vitamin K dependent. Okay, so vitamin K is essential for the synthesis of factor like factor 2, then 7, then 9, then 10. So factor 2, 7, 9, 10, these factors are vitamin K dependent, means ये जो factors होते हैं ये सब बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म। उसका एक्टिव फॉर्म जो है, उसका एक्टिव फॉर्म जो है, मतलब फाइब्रिनोजन का एक्टिव फॉर्म क्या होगा, इसको नाम है फैक्टर 1। तो उसके 1 के आगे सिर्फ स्मॉल ए लगा दो, 1A मतलब इट इज अ एक्टिव फैक्टर ऑफ फाइब्रिनोजन, ए मतलब प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिव फैक्टर। सो आउट ऑफ दिस फैक्टर नंबर 2, 7, 9 एंड 10, दे आर द डिपेंडेंट ऑन विटामिन के। फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस फैक्टर विटामिन के इज रिक्वायर्ड। कौन से फैक्टर है आपके, फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 9, फैक्टर नंबर, दिस वाज अगेन अ क्वेश्चन इन जीपैट 2008। दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू टेल दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता जाता है। ये 4-5 बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। और नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द योर प्लाज्मा। प्लाज्मा में मैं
प्लाज्मा में बोला था मैंने 90 to 92% आपका क्या है, वाटर है, लेकिन बाकी का 10% क्या है, उसमें आपका बाकी का प्लाज्मा प्रोटीन्स है, ये वो है। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन? सो albumin is there. So albumin has a molecular weight of 65,000 to 69,000. So this was question in GPAT 20. पहला क्वेश्चन GPAT 20 का पेपर ओपन करो, पहले ही क्वेश्चन आपको आएगा, व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ albumin? इट वाज 65,000. GPAT 20 में ये पहला क्वेश्चन था. देन ग्लोबुलिन्स का मोलिकुलर वेट कितना है, उसका है 90,000 to 1.5 lakhs. देन फाइब्रिनोजन का कितना है 3.4 lakhs to 5 lakhs. अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन का कितना है मोलिकुलर वेट 4,000. देन अल्फा ग्लोबुलिन कितना है 9,000. अल्फा 2 ग्लोबुलिन कितना है 13,400. लिपोप्रोटीन का कितना होता है 2 lakhs to 3.4 lakhs. उसके बाद हीमोग्लोबिन का कितना है 64,000. ये मोलिकुलर वेट है प्रोटीन्स का. अभी एल्बुमिन का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्बुमिन इन द प्लाज्मा? सो इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन ऑफ पीएच. सो बफर, what is the buffer system of body? So albumin is the buffer system. This was again a question in albumin will constitute upon 70 to 80% buffer of body. So whatever pH is maintained in your body, 70% pH is maintained because of this albumin. Again it will regulate the osmotic pressure. So transportation, regulation of pH, osmotic pressure of blood is maintained by this albumin. Alpha and beta globulins. We have different globulins in your plasma. There are alpha globulins, there are beta globulins, there are gamma globulins. Okay? So alpha and beta globulins, they are involved in the transportation function. These gamma globulins, they have a defense function in the body. Gamma globulins means antibodies. So whatever antibodies are there, they are nothing but the globulins. Okay? So antibody जो होता है आपका gamma globulins, immunoglobulins. So that is nothing but the globulins. Okay. Then fibrinogen, it is a blood clotting. It is involved in the blood clotting. Then alpha 1 acid glycoprotein, it is also known as orthomucoid factor. Alpha 1 acid glycoprotein is known as the orthomucoid factor, and it is an indicator for acute inflammation. Means if the plasma level of this alpha acid glycoprotein is increased, that means you are having inflammation somewhere, right? Then alpha 2 globulin, it is also known as ceruloplasmin. Okay, it is also known as ceruloplasmin. Alpha 1, alpha 2 globulin. Okay, so this alpha 2 globulin is engaged in the incorporation of iron into ferrin. जो आयरन का प्रोटीन बनता है बाद में, आयरन प्लस ग्लोबुलर प्रोटीन ट्रांसपेरिन बनता है, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है आयरन का. तो इसमें इन्वॉल्व है ये कौन, अल्फा 2 ग्लोबुलिन. ओके. देन लिपोप्रोटीन, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स, एंड हीमोग्लोबिन हैज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. So it has a function of transportation of oxygen. So it will carry oxygen. So these are the important plasma proteins and their function. So what are the different types of anemia? Anemia means what? If you have a low hemoglobin, if you are having less hemoglobin than a normal value, then it is known as anemia. So anemia may be because of different reason. कि अगर आपका ब्लड लॉस हो गया, उसमें WBC चला गया, तो आपको एनीमिया हो जाएगा. अगर आपका कोई ड्रग ने हिमोलाइसिस कर दिया, तो आपको एनीमिया हो जाएगा. या फिर आप डिफिशियंसी हो, आपको विटामिन B12 का डिफिशियंसी है तो एनीमिया हो जाएगा. आपको फॉलिक एसिड का डिफिशियंसी है तो आपको एनीमिया हो जाएगा. आपको आयरन का डिफिशियंसी है तो आपको एनीमिया हो जाएगा. मतलब if your hemoglobin is less than normal, then you are suffering from a condition known as anemia. There are different kinds of anemia there are different kinds of so जहाँ पे depending upon the cause there are different types of anemia. So what are these? So megaloblastic anemia. Megaloblastic means what? Mega means large, blast means cell. There will be a large RBC and non-functional RBC. That is known as megaloblastic anemia. It is due to the deficiency of vitamin B12 and folic acid. It is also known as vitamin B12 deficiency anemia. That is a megaloblastic anemia. ये याद रखो आप, यहाँ पे लिखा का मैं बोल ज्यादा रहा हूँ, ध्यान दीजिए थोड़ा सा.
Megaloblastic anemia, it is also known as vitamin B12 deficiency anemia. In this case, WBC will be large sized WBC, and they are known abnormally large sized erythrocytes found in the blood in the megaloblastic anemia. Then second one is a pernicious anemia, most common form of vitamin B12 deficiency. So most common vitamin B12 deficiency will result in a pernicious anemia. This was question again in GPAT. I think last year था या 2020 में था. So pernicious anemia is because of vitamin B12 deficiency. This one is also because of deficiency of vitamin B12. But most common deficiency of vitamin B12 is a pernicious anemia. The next one is a aplastic anemia. Aplastic means the structure of RBC will be not a flexible. It will be a rough structure. So aplastic anemia is result because of bone marrow failure or bone marrow suppression. For example, if any drug is able to depress your bone marrow, if any drug is able to suppress your bone marrow, so it will have definitely adverse effect of aplastic anemia. कि अगर कोई ड्रग आपके बोन मैरो को सप्रेस कर रहा है तो उसको 100% एप्लास्टिक एनीमिया एडवर्स इफेक्ट होगा, जो मोस्टली एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं. सो दे विल सप्रेस योर बोन मैरो, सो दे विल हैव एडवर्स इफेक्ट ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया. एंड इवन सम antibiotics also are having aplastic anemia as adverse effect. Your chlorpenicol, उसको भी है. So it is because of the result of bone marrow suppression, thrombocytopenia. Okay, so along with this aplastic anemia, thrombocytopenia will be there. So increase in number of thrombocytes, decrease in number of thrombocytes, that is a low platelet count. Cytotoxic drug or anti-cancer drug or anti-inflammatory drugs, anticonvulsant, certain antibiotics will cause aplastic anemia. Then hemolytic anemia. Hemolytic, hemo means blood, lytic means breakdown. So breakdown of RBC result in the hemolytic anemia. So if any drug is able to break down your RBC, it will result in hemolytic anemia. Then congenital hemolytic anemia. Congenital hemolytic anemia due to genetic defect or due to genetic abnormality leads to synthesize abnormal hemoglobin. So congenital hemolytic anemia में क्या होता है कि उसमें क्या होता है, एक डिफेक्टिव जीन होता है, तो उसमें प्रॉपर हीमोग्लोबिन जो बनना चाहिए नॉर्मल वो नहीं बनता, एबनॉर्मल बनता है, तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन कैरी नहीं करता. दैट्स व्हाई इट्स अ कंजेनाइटल hemolytic anemia. सो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनने के बाद सो इट विल इंक्रीज द रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी एंड रिड्यूसिंग द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी. तो फॉल्टी हीमोग्लोबिन बन जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो आरबीसी का मेम्ब्रेन है वो डिफेक्टिव बनता है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम होता है, लाइफ स्पैन भी कम होता है. देन सिकल सेल एनीमिया, अनदर इज अ सिकल सेल एनीमिया. एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज सिंथेसाइज्ड व्हिच ऑक्सीजनेटेड मेकिंग आरबीसी सिकल शेप. जो नॉर्मल आरबीसी होता है, जो कॉन्केव शेप होता है, उसका वो शेप निकल जाएगा और सिकल शेप आएगा. उसको सिकल शेप बाद में मैं बुक में दिखा रहा हूँ, तो दैट इज नोन एज सिकल सेल एनीमिया. देन थैलेसीमिया इज अगेन a genetic disorder, inherited condition common in the Mediterranean countries. जो आपका यहाँ पे इंडिया, साउथ एशिया, यहाँ पे कॉमन है थैलेसीमिया. इट कॉज abnormal hemoglobin production which in turn reduces the erythropoiesis and stimulate hemolysis. तो उसमें भी एनीमिया रहेगा, उसको बोलते हैं थैलेसीमिया. Polycythemia I have already explained. So if there is an increased number of RBCs increased than normal, that is known as a polycythemia. Then another is there leukopenia. So leukopenia is what total blood leukocyte count is less than 4000 cubic minute. If your leukocyte count is low than normal, then it is known as a leukopenia. Then neutropenia or granulocytopenia, what is it? So abnormal increase in number of granulocytes, that is known as a neutropenia or granulocytopenia. Then leukemia is nothing but the blood cancer. So malignant proliferation of leukocyte in the blood, that is nothing but the blood cancer. So it is important, whatever is important, it is